Assalamualaikum. How are you all? Hope you all are doing well. I am your social studies teacher here with summary of Zoom online lecture number 1. This is your social studies book. This is the 4th edition of your book and it is written by Nicholas Horsburgh. ठीक है? In this book, our first unit is geography, world geography. It means that you will study about the geography of the world. ठीक है? And then in this unit we will study about maps. ठीक? Map असल में होता क्या है? What is map? A map is a drawing made to show some area of the earth. This area can be the land or the sea or both. A map shows us where one place is in relation to another place. Now the second thing is kinds of maps. There are 3 kinds which are given in your book. ठीक है? वैसे तो बहुत सी काइंड्स हैं, लेकिन 3 काइंड्स जो कि आपके लेवल पे दी गई हैं वो है हमारे पास फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड रिलीफ मैप. फिजिकल मैप. अब फिजिकल मैप होता क्या है? व्हाट इज़ फिजिकल मैप? अ फिजिकल मैप गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज एंड अदर लैंड फॉर्म्स. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फिजिकल मैप ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. देन सेकेंड काइंड ऑफ maps is political map. Political map, the other name of political map is administrative map. Political map gives us information about towns, cities and borders between countries. ठीक है? Now the third kind of map is relief map. Relief map shows us height of hills and mountains with lines drawn to show height in meters. ठीक है? Then we have longitude and latitude. What are longitude and latitude? ठीक? Longitude are the vertical lines. The vertical lines which are drawn from north to south are called meridians of longitude. The vertical lines are drawn from north to south, passing through the north and south pole. ठीक है? Passing through the north and south poles. These lines are running north to south are called meridians of longitude. The horizontal lines are drawn from east to west. The horizontal lines are drawn from east to west parallel to equator. ठीक है? These lines running east to west are called parallels of latitude. अच्छा, equator is the line of latitude. Equator is the line of latitude which goes all the way around the middle of the earth. ठीक है? It divides the earth into northern hemisphere and southern hemisphere. There are 90 parallels of latitude. There are 90 parallels of latitude. Equator जो है it is at 0 degree. ठीक है? जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो डिग्रीज जो हैं हमारी इंक्रीज होती जाती हैं. ठीक है? द इक्वेटर इज़ एट 0 डिग्री एंड द डिग्रीज इंक्रीज नॉर्थवर्ड्स एंड साउथवर्ड्स फ्रॉम द इक्वेटर. द नॉर्थ पोल इज़ एट 90 डिग्री नॉर्थ. here we have north pole and here we have south pole. ठीक है? एंड साउथ पोल इज़ एट 90 डिग्री साउथ. The meridians of longitude are also marked in degrees. The meridians of longitude are also marked in degrees. You can see in the picture that meridians of longitude, these are also marked in degrees. ठीक है? 0 degree, then 30 degrees, 60 degree east. So these are also marked in degrees. There are 360 degrees in a complete circle. ये जो हमारे पास complete circle होता है तो उसमें हमारे पास total जो है हमारे पास आती हैं 360 degrees. One of all the meridians pass through the poles. जितनी भी हमारे पास meridians हैं, meridians of longitude हैं, it pass through the poles जो कि north pole से south pole की तरफ जाती हैं and are of equal length. One of these lines has to be 0 degree. One of these lines has to be 0 degree. यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं one of these line. ठीक है? has to be 0 degree. This is called prime meridian and it passes through Greenwich, England. Lines drawn to the west
Lines drawn to the west of the prime meridian are marked with W and those to the east are marked with E. The 180 degree meridian is exactly ये is exactly opposite the 0 degree meridian on the other hand side of the world. It is known as the international date line, IDL जिसको हम बोलते हैं. It is neither east nor west. When we cross IDL traveling towards the east, so we will gain 1 day. When we cross IDL traveling westwards, we will lose 1 day. ठीक. This was all about your longitudes and latitudes. Now the basic requirements or how to study a map. इनमें जो फर्स्ट थिंग जो है हमारे पास दैट इज डायरेक्शंस. हाउ टू स्टडी अ मैप. अब मैप के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है. नंबर 1 इज़ डायरेक्शंस, नंबर 2 ग्रिड एंड नंबर 3 इज़ की. डायरेक्शंस क्या हैं. डायरेक्शंस में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस आ जाती हैं. एक आती है कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और दूसरी आती है इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट. हियर वी हैव नॉर्थ ईस्ट, हियर वी हैव नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. सेकेंड थिंग इज ग्रिड. हमने पढ़ा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में. ठीक है. ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जब आपस में मिलती हैं तो ये बनाती हैं ग्रिड. ऑल द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड एज शोन ऑन द मैप. These are imaginary lines but you cannot actually see them on the earth surface. Actually ये lines जो हैं ये imaginary हैं, means not real, means के actually ऐसी कोई line नहीं है, लेकिन ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपने समझने के लिए ये लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं. देन नंबर 3 इज़ की. यूजुअली ईच मैप ऑल्सो हैज़ अ की. इट टेल्स अस व्हाट द सिम्बल्स एंड कलर्स यूज्ड ऑन द मैप मीन. जो सिम्बल्स और कलर्स मैप में गिवन होते हैं वो हमें बताते हैं. ठीक है. की के बारे में कलर्स सिम्बल की जो होती है कलर्स और सिम्बल्स में शो की जाती है. कलर्स सिम्बल्स एंड पैटर्न्स हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स मोर इजीली ऑन अ मैप. ठीक. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि हमें मैप रीडिंग में आसानी देते हैं. इजीली हमें मैप रीडिंग हम कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज एटलस. व्हाट इज एटलस? Atlas is the book of maps. A book of maps is called an atlas. वो बुक जिसमें हम डिफरेंट मैप्स देखते हैं, जिसमें हम अपने कंट्री का भी मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप भी देखेंगे, और फिर डिफरेंट आ जाते हैं. उसमें हमें ओशंस भी बताए जाते हैं, समटाइम्स उसमें हमें कॉन्टिनेंट्स भी बताए जाते हैं, कंट्रीज़ भी बताए जाते हैं. इवन जो किसी भी कंट्री का जो मैप होता है उसमें हमें सिटीज़ भी बताई जाते हैं, प्रोविंशियल कैपिटल्स बताए जाते हैं. तो ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स होते हैं जिस बुक में होते हैं उसको हम कहते हैं एटलस. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेक्चर. ठीक है.